everyone, welcome back to my YouTube channel English Winglish by Pooja Singh. If you are preparing for UGC NET examination, today's video is going to be a game changer. Why? Because today I'm sharing a list of must read works, and that too only summaries. Okay, so if you are going to read these works are going to be work like gold mines. So if you're preparing for UGC NET examination, must read these works and go to examination. Why? Because these are always being asked by UGC NET examination. So let's get started. So if we'll start with must read works, we should always start with father, right? And who is the father of English literature? Obviously, everybody knows. If you are an English literature student, you must be knowing this. If you are literally, he is the father of English literature, and I'm talking about none other than William Shakespeare. So if you're going to start with William Shakespeare, we cannot miss his favorite work, that is Hamlet. So you need to know the summary of Hamlet, okay, the characters and the main theme. What is the theme? Why Hamlet did not take revenge in initial? He was knowing everything from starting, but he did not take revenge at that time. Why? Because Claudius was praying at that time, and we say that if you're killing someone while praying, he goes to heaven. So that is why he did not kill. So, and where many conflicts will be there. So you need to have a short summary of Hamlet, and that's it, nothing else. Then you go for Othello. Othello, in this also, you just need to know the characters. What was right to smother Desdemona? Was it right to have sexual jealousy? That is the main theme of this. Then was Iago did right? Was Othello did right? So you just need to focus on the themes, what they did, was it right or not in your opinion, and you just need to learn the characters, and that's it. In Macbeth, what you need to know, you just need to know about the three witches, what did they say, what their prophecies were, and you just need to know about what Lady Macbeth wanted to say and how it was all the quotes were said, and that's it. Okay, then you need to know about King Lear. Why King Lear was so famous at that time, story within a story. Then what was a tragic play, how King Lear was in love with three daughters, and then he just only selected two of them, and why Cordelia was a good daughter, what she did, and how all the ending went. Okay, then you need to know the Tempest, all the magic things are there in that. Then Midsummer's Night Dream is the best, it is one of the best comedy I have ever read. So much of confusion, but at last it is a happy ending comedy. So for if you're working on William Shakespeare work, you just need two things. Okay, first, all the characters, you should be knowing all the characters and what were their tragic flaw, because when a hero is working, he does everything, okay, but at some times he does some mistake, okay, and then the tragic flaw starts from that time, until unless you don't reach at the height and then you fall. And that is why we see a story how a hero goes from one phase to other phase. So for William Shakespeare, you just know the characters, and for referring or making notes, you can go for Spark Notes for that, and that is tip for you. For William Shakespeare, if you want to read William Shakespeare, go for Sparks Note, very crisp and sharp notes, and then know your Shakespeare for clarity. That is the best. So for second, we'll talk about Christopher Marlowe. When we are talking about Christopher Marlowe, we cannot miss Geo of Malta. This year in 2025, it has been asked which is not a revenge tragedy. So Geo of Malta was one of the options in that question, so we cannot miss it. And earlier also it has been asked many times by UGC NET. So it is a revenge tragedy, and so many bloodsheds are there, so many conspiracies are there. So you just need to know this in detail because this is important to work. Then you need to focus on
Canterbury Tales. How can we forget Canterbury Tales? It is very, allegorical poem, and how many pilgrims are there? So many questions are asked about this also. So this is a very easy one. You can go for YouTube videos, or you can directly Wikipedia it. Or you can read it on Wikipedia. This answer is given in very simple matter, and very deep analysis is given. Go for it. Wikipedia for Canterbury Tales and Jew of Malta also. For Jew of Malta, you can watch videos, okay, so that you will get a clarity. Then the third work is Dr. Faustus. In Dr. Faustus, we need to know about हमारे जैसे लाइफ में होता है ना फेम. इफ यू रीड डॉक्टर फॉस्टस ना, दिस इज सो गुड बिकॉज इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी वांट टू अचीव एवरीथिंग इन आवर लाइफ. और ये आज भी हो रहा है हमारे लाइफ में, जो क्रिस्टोफर मार्लो बहुत टाइम पहले लिख चुके थे. एंड सेम गोज फॉर विलियम शेक्सपियर ऑल्सो, बिकॉज वो उस टाइम पे जो लिखते थे आज भी वही हो रहा है. लव, हेट, जेलसी, हर कुछ वो हो रहा है. टाइम बहुत सेंचुरीज, इतने सारे सेंचुरीज का डिफरेंस है, बट स्टिल वी आर ऑन द सेम पेज. वो जो उस टाइम पे लिख चुके हैं आज भी हम वो चीज़ ही फॉलो कर रहे हैं, राइट? मतलब हर चीज़ के बारे में, दोस्ती के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, लव के बारे में. ही एट दैट टाइम ही सेड लव इज ब्लाइंड, लव सीट्स नन, एवरीथिंग गो, बट टाइम विल बी ऑलवेज देयर, राइट? Time waits for none. And so many thoughts have given. Like that, Christopher Marlowe was also there. He also gave a very right thought about Dr. Foster, because what he did, he made a contract for his soul. 24 years he will be having all the magic thing और सारा power, जितना भी black power होता है, he'll be doing that. और उसके बदले में he has given his soul to Lucifer, ठीक है, जो सैटर्न होता है, ठीक है. तो उसमें what he did कि उसका जितना भी वो वर्क होता है वो सारा बहुत सारा मैजिक करता है. यू जस्ट रीड, दिस इज awesome story. I'll not go into deep, otherwise this video will be very long. I just want to just tell you the names. तो क्रिस्टोफर का डॉक्टर फॉस्टस का ये आप बिल्कुल भी पढ़ना मत भूलिएगा. दिस इज अ वेरी awesome play I have ever read in my life, and yes, you will connect with it. And yes, do read this work of Christopher Marlowe. Then we'll come to Edmund Spenser. For Edmund Spenser, you just need to know the names of all the works of him. But for Faerie Queene, you need to go and detail the summaries of Faerie Queene. इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, कैरेक्टर्स का नाम बहुत अच्छे से याद करना है. एंड देन सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्स का क्या होता है और वर्च्यूज़ क्या होता है, मीन सिम्बल्स आपको याद करना है. जैसे बुक 1 में रेड क्रॉस नाइट, इसका क्या वर्च्यू है, इसका होलीनेस वर्च्यू है. देन बुक 2 में सर ग्वेन का क्या वर्च्यू है, तो उनका टेम्परेंस है. फिर फीमेल नाइट ब्रेटोमार्ट का क्या है, चेस्टिटी और प्योरिटी. देन टेलामॉन्ट का वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप. देन नाइट कैलिडोर कर्टसी. देन यू शुड बी नोइंग कि ये किस पे मॉडल्ड हुआ है, इवल कैरेक्टर्स कौन था, गुड कैरेक्टर्स कौन था, किंग आर्थर कौन से बुक में अपीयर होते हैं एज अ हीरो. क्योंकि इस वर्क में लाइक 1 2 3 4 10 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड अभी तक में, ठीक है. तो आप ये बुक बहुत अच्छे से पढ़िएगा. यू गो फॉर समरी, और मेनी वीडियोज आर देयर ऑन यूट्यूब. सो यू जस्ट नीड टू रीड एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन इन वेरी डिटेल. देन फॉर फ्रांसिस बेकन, you need to study him in detail, because a lot of questions ask every time. और match the following में इनका हमेशा आता है, हमेशा. So you need to study everything. So new method, novum, orgum, sanctarium, इनका आपको सिर्फ go through करना है, because इसमें ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं आता. match the following में आता है, works if you will be knowing works, या फिर chronological order as always. So advancement of learning you can go. You just need to know the name of that. Then New Atlantis and all the essays of Francis Bacon are very important. Why? Because इसका जो starting line होता है या फिर ending line होता है, जो quotes इन्होंने दिया है वो बहुत ज़्यादा famous है, और ये lines आता है. So अगर आप एक बार भी go through कर लोगे ना, तो that is very बहुत easy हो जाता है वो आपको remember करने में. जैसे reading makes a full man,
कॉन्फिडेंस मेक्स अ रेडी मैन एंड राइटिंग मेक्स अ एग्जैक्ट मैन। तो ये ऐसा बहुत सारे इन्होंने कोट्स दिया हुआ है, तो आप ये कोट्स पढ़ सकते हो। ऑफ स्टडीज़ का है, इसमें बहुत सारा कोट्स आपको मिल जाएगा। फिर ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, इसमें बहुत सारा कोट्स उन्होंने दिया है, जैसे वाइफ्स आर यंग टू मिस्ट्रेस, कंपेनियन फॉर मिडिल एज एंड फॉर ओल्ड मैन इज नर्स। तो इसमें वाइफ के बारे में बताया गया है कि जो अगर वाइफ यंग है तो वो मिस्ट्रेस है, अगर मिडिल एज में आपके लिए वाइफ आपके लिए कंपेनियन बन जाती है, और जब आप बूढ़े हो जाते हो तो आपके लिए आपकी वाइफ नर्स बन जाती है। तो ऐसा बहुत सारे इन्होंने दिया हुआ है। ये बहुत एंटी फेमिनिस्ट था उस टाइम के लिए, जो कि अभी बोला जाता है। और इसमें बोला जाता है फिर फॉर अ टू अ ट्रैवलर और फॉर ट्रैवलर, इसमें क्या क्या चीज़ हमें करना चाहिए। फिर ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में भी इन्होंने बताया कि क्यों फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट है, तो यू कैन गो फॉर दैट। और सारे इनके जो एसेज हैं इसमें से वर्क आया हुआ है। देन ही हैज़ ऑल्सो रिटन ऑफ ग्रेट प्लेसेस की प्लेसेस क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट कोट्स भी इन्होंने लिखा है, ऑफ ट्रूथ के बारे में लिखा है इंपॉर्टेंट कोट्स। फिर इन्होंने ऑफ रिवेंज के बारे में भी लिखा हुआ है, दैट रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, देन इट इज द ग्लोरी ऑफ अ मैन टू पास बाय ऑफेंस, दैट विच पास्ट इज गॉन एंड इररिवोकेबल। तो ये बहुत सारा इनका है। फिर ऑफ सुपरस्टिशन इनका बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट कोट्स ले देकर जो भी इम्पॉर्टेंट है, इनका कोट्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमेशा आता है और इसके बारे में पूछा जाता है। सो these works are of only Elizabethan period, and I find these works are important in my opinion. Of course, again, no offense, you can read number of books, you can do whatever you feel like, but in my opinion we should not be reading all the works, but yes, we should have a surface level understanding, because at times, you know, we just, when we read, we go in depth of every works, and that is not required in UGC NET, because it just want, this examination just wants to test your knowledge of remembering things and correlating with it, right? It's, they are not asking about you should be knowing like under the sun every writer's name. That is not humanly possible, and that is why we just need to focus on the things which we can have in our control. So for Elizabethan era, these are the important ones which you should not be miss out. And some of the revenge tragedies are like Spanish tragedy, you must be knowing with all, right? Spanish tragedy, then Cymbeline, then Beowulf, they are like one go you should be reading that, एक बार में आपको वो पढ़ लेना होता है. Then if we'll talk about restoration period, so in restoration period for Dryden's you can go Absalom and Epictetus, focuses on political satire, and that is very important. Okay, for romantic age, you can go for Wordsworth, Keats, and then a lot of works for that. Then in Victorian age also, you can like all the works of Charles Dickens and Virginia Woolf and everything. So these, how we come to know these all, because when we analyze PYQ, these are the important things we come to know. Okay, these are the works which have been repeated since many years, right? So हम लोग को ऐसे ही करना है. You need to focus on the important works first. Have an understanding. ये जो वर्क्स मैंने आपको बताया, ये सारा वर्क्स इन्होंने बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से लिखा है, और इसमें आपको उनका थीम्स पता चल जाएगा. द वेरी फर्स्ट थिंग, थीम्स पता चल जाएगा आपको, उनका मोटिव पता चल जाएगा कि हाँ, एंड उन्होंने बहुत बेहतरीन, ये जितना भी वर्क्स है ना उनका बेहतरीन है. दे आर द बेस्टेस्ट वर्क. सो मैनी हैव कमेंटेड. GB शॉ ने किंग लियर के लिए बोला है कि आज तक ऐसा वर्क मैंने देखा नहीं है कि इस तरह का ट्रेजेडी, किंग लियर जैसा ट्रेजेडी किसी ने लिखा है. सो बहुत सारे राइटर्स ने बहुत उनको प्रेज किया है उस वर्क के लिए. क्रिस्टोफर मार्लो के जो वर्क है डॉक्टर फॉस्टस, उसको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला है. सो अगर जब आप मेन राइटर्स का मेन वर्क्स पढ़ते हो ना, तो आपको पता चल जाता है ओके, ये जो राइटर है इनका बैकग्राउंड ऐसा है, ये इस स्टाइल में लिखते हैं. और वंस यू गेट टू नो अबाउट द स्टाइल, इट्स इजी टू गेस, इट्स इजी टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर एंड choose the correct answer. So these are the benefits of having and analyzing PYQ. So I have already made a video on how to analyze PYQ. If you haven't seen that video yet, please my dear,
don't waste your time. Go and watch that video. I'll give the link in description, and that is the best. So that's all for today. If you're preparing for UGC NET examination, these works are must reads for your UGC NET examination. And do let me know in the comment section which of the works you find most challenging. So I'll be making a detailed video on them, or to how to strategize or how to make notes or anything like that. Just comment down. In today's video, I have only explained or told you about the Elizabethan era. Okay, so yes, and also don't forget to like, share, subscribe, and follow for more such videos. Together we can ace UGC NET examination. It's not that hard. You just need to strategy in right way. Okay, bye.